Hello everyone. So today I am going to discuss something about hyperacidity and gastritis. But to understand that, first we need to understand how the digestive system of our body acts. Okay. For that I have made a short diagram here. This is a rough sketch, and it may not be technically correct. So let us see what is the digestive system of the human body. It starts with the mouth. So the moment we take in the food, the system starts working. Here the cutting and grinding of the food takes place into simpler substances. Apart from cutting and grinding, it is mixed with mucus, different salivary amylases and other enzymes से वो coating होते हैं. After that it proceeds to the pharynx. From pharynx it moves to the esophagus, which is a muscular tube. From there it travels all the down to this muscular sac, which is called the stomach. Now stomach is a place where the food is stored. It helps the body to take its own time to digest the food properly. Now the main enzymes which are found here are the pepsinogen, जो inactive form में रहते हैं और पेप्सिन में convert होते हैं. Apart from that is the gastric lipases. Apart from this, one major compound which we need to discuss, which we will discuss here, is the HCl. We will come to the HCl part later. From this it moves on to the small intestine. Small intestine में majorly absorptions, maximum absorption होते हैं. From there it travels to this part, which is the large intestine, and from there out of the body as fecal matter. Okay. Now there are all enzymes specifically in this mouth, stomach, then also pancreas and liver also helps in the process of digestion and breaking down of the food. फिर small intestine में majorly digestion and absorption complete हो जाते हैं. Okay. Now hyperacidity में क्या होते हैं? When the secretion of acid becomes due to some reason or the other बहुत high हो जाते हैं. ठीक है. और there is a mucus line here on the inner lining में है, there is a mucous membrane which is formed. What it does is protect the stomach itself from the hydrochloric acid. Otherwise the hydrochloric acid इतना strong है that it will digest the stomach itself. Okay. So the mucus line is protecting the HCl from attacking the stomach. Okay. So when there is an imbalance between the two, so the mucus lining also needs to be repaired. हमेशा हीट ले रहा है HCl से, तो उसका रिपेयरिंग टाइम पे होना ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट द HCl अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हो, दैट विल कॉज डैमेज. एडिक्वेट रिपेयरिंग अगर नहीं हो, अगर एडिक्वेट लाइनिंग ऑफ द म्यूकस नहीं हो, तो हमें गैस्ट्राइटिस और हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम होंगे, विल बी प्रोन टू दैट. ओके. तो ये कैसे हो सकते हैं? देयर कैन बी मेनी रीजंस. मैंने 3 रीजंस यहाँ पे जो मेनली मैंने नोट किया है. वन इज द जेनेटिक लिंक. ओके. एवरीबडी इज सेइंग देयर इज अ जेनेटिक लिंक. सेकेंड इज द फूड हैबिट. थर्ड इज द स्ट्रेस, द मॉडर्न स्ट्रेस. सो जेनेटिक लिंक इज देयर. फूड हैबिट if it is irregular food habit अगर है, then it will lead to more secretion of acid. अगर हम हमारे फूड में ज़्यादा फैट और अगर जंक फूड्स खा रहे हैं, तो इट विल लीड टू मोर सिक्रेशन ऑफ एसिड, HCl. ओके. स्ट्रेस लेवल कैसे होते हैं? तो टू डिस्कस विथ यू इन ए वेरी सिंपल मैनर, बहुत सिंपल मैनर. तो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, द ब्रेन विल एक्ट इन इट्स ओन वे. So what it will do, it will first send the information to the hypothalamus. Hypothalamus will now inhibit or exhibit the parasympathetic and the sympathetic nervous system, जो autonomous nervous system के एक part है. If the parasympathetic nervous system becomes overactive, उसमें क्या होंगे? It will stimulate gastrin, जो एक compound है यहाँ पे, उसको active ज़्यादा करेंगे, उसको stimulate करेंगे. Gastrin what it does, it will in turn, it will stimulate the parietal cells जो यहाँ पे है, and these parietal cells produce HCl. ठीक है. तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो
it will lead to more and more secretion of HCl. Secondly, अगर sympathetic nervous system अगर वो ज़्यादा एक्टिव हो गए तो what it does, we all know कि sympathetic nervous system flight and fight mode of the body के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए क्या है, तो बॉडी एक प्रोटेक्टिव मोड में चला जाएगा, तो उससे ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा मसल्स और ब्रेन में चले जाते हैं, तो इन दिस रीजन ब्लड फ्लो कम हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ये जो हम बोल रहे थे अभी म्यूकस के रिपेयरिंग वो पुअर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सेकेंडली एडिक्वेट ब्लड फ्लो अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो यहाँ के जो ऑर्गन्स है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। ओके, नाउ योगा से क्या कर सकते हैं, एक बाय योगा, by the discipline of yoga we can bring a discipline in our food habits, okay, which is there in the Annamaya Kosh. Okay, we will get into Annamaya Kosh in details later. Second, by doing asanas we can facilitate more blood flow in this region and helping this organ to function in a better way. Okay, apart from that, by doing dynamic asanas as well as meditation and pranayama, we can bring a balance between the sympathetic and the parasympathetic nervous system, and in this way we can deal with the gastritis and hyperacidity issue. Okay, thank you so much. Hope to meet you again in the next video. Thank you so much.